Good morning, students. Welcome to the online class of School of Open Learning. Myself, Guneet Kaur, and I'll be taking your financial accounting. So, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि हमारा सिलेबस क्या है financial accounting का and which book we should refer. So, the book that I will suggest is J.R. Monga. J.R. Monga Basic of Financial Accounting. ये वाली बुक हम रेफर करेंगे एंड इसी बुक में ही हमारे पास स्टार्टिंग में वी हैव द सिलेबस. सो लेट्स जस्ट क्विकली गो थ्रू द सिलेबस कि कौन से चैप्टर्स हमने कवर अप करने हैं. First of all, in the starting we have introduction. So introduction is similar to what you have already learned about accounting in your 11th, in your class 12. So introduction में basic रहेगा हमारा कि what is financial accounting, what are its characteristics, different types, what are the limitations, what are the advantages, what are the bases of accounting, cash base of accounting, accrual base of accounting. So these things you have already studied once in your class 11th. So we'll just quickly, give a quick revision what we have already studied. So the second chapter is conceptual framework. So this is new. इसमें हम पढ़ेंगे कि accounting standards क्या होते हैं. What was the need to have accounting standards? Then the third chapter is basic concepts and conventions. So basically, in this chapter, we will study about the concepts, accounting conventions. Then we have chapter number 4, and which is about the gap, generally accepted accounting principles. What are accounting standards? What are gap, generally accepted accounting principles? Then what are their features, why they are important, their significance. In the chapter number 5, we are going to study about the IFRS. So this is a very new concept, not new, but very important since it's been many years that we have IFRS now. So this is one of the very important topic. What is IFRS? Why it was needed? And how it is different from accounting standards, Indian accounting standards. Then the chapter number 6 talks about the accounting process. Accounting process starts with the journal entry, then we have ledger, then we have summarization, preparation of final accounts. Then we have chapter number 7, which talks about the capital and revenue items. It gives you a brief introduction about a differentiation between capital items and revenue items. Then we have chapter number 8, which talks about preparation of final accounts. So students, final accounts we have already studied in our class 11th and 12th. So final accounts में everything will be same जैसे हमने पहले अपने स्कूल में करा कि preparation of trading will be there, then P&L, and then the balance sheet we have to prepare, and accordingly we have some new adjustments, some a little more higher level because अब आप बीकॉम में ये चीज दोबारा पढ़ रहे हैं final account, so the level of the questions will be a little higher, but it will start with the basic. तो आपको as such कुछ new नहीं होगा. It will start what you have already started because basics जो होते हैं, concept होता है, that always remain the same. So number 1 practical chapter is final accounts. Then chapter number 9 is financial statements of NPO, not for profit organization. NPO was also in your 12th standard. Then the new chapter is depreciation accounting. So we have also studied depreciation. We have two methods of depreciation. We have WDV, written down value method, and straight line method. The new thing that we're going to study here is change of method. So when we change our method of charging depreciation from straight line to WDV or from WDV to straight line method, so this is a new concept. Then we have inventory, methods of inventory valuation, FIFO method, LIFO method, weighted average. So everything we're going to study in this chapter.
Then there are totally new chapters because so far आपने final accounts, NPO and depreciation. These three chapters you have studied in your school, but accounting for hire purchase is chapter number 12 is a new chapter for you. This is a chapter on hire purchase. When we purchase an asset on hire purchase, then we, you know, purchase it on installment system. Then we have chapter for leases, accounting for leases. Then chapter number 14 will be inland branches. So whenever we do transaction between a branch, so there is a head office. Then head office always has a branch somewhere in another, in the same city or another city. So whenever transactions are happening between the head office and the branch, so we prepare branch accounts. Then we have is departmental accounting. So this is also a new chapter for you. This unit number 5, we will not cover because this is a computerized accounting system. Since we have offline classes, online classes or not present offline, so this is not, this is we will not do. Then we have unit number 5, partnership accounts. So we have also studied partnership in our class 12, but there are a lot more new concepts. इसमें बहुत सारे न्यू टॉपिक्स हैं जो हमने अपने 12th क्लास में नहीं पढ़े. So in the 12th class we just studied the basic की partnership में what is admission, what is retirement and what is death. But in this, in BCom level, partnership is little more advanced. There are a lot more new topics that we're going to talk about. Partnership and then is dissolution. So basically this was all your syllabus for the financial accounting जो हम cover करेंगे. And जैसे कि मैंने आपको बताया that book which we are going to refer will be J.R. Monga, Basic of Financial Accounting. So let's start with the introduction that financial accounting क्या होती है, what are its advantages, what are its functions. So in the starting chapters we have theory that we are going to discuss, and subsequently we'll move to the practical portion of the financial accounting. So students, let's start with the introduction of financial accounting. So financial accounting, first of all, before starting financial accounting, let's understand the basics. कि what is accounting? Accounting क्या होती है? Let's first understand. So accounting is concerned with summarizing the recorded transaction and interpreting them and communicating the result. So basically accounting student एक बहुत wider concept है जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्टेप क्या होता है, वी आइडेंटिफाई द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, देन वी रिकॉर्ड देम, रिकॉर्डिंग इज आवर journal entry, then we classify them, classify is preparing ledgers, and then we summarize the transactions, that is we prepare the final accounts, we prepare the trading account, we prepare the P&L account, and then we prepare the balance sheet and interpreting and communicating the result. So accounting is your, it's a wider concept. It's a big process which starts with identifying the financial transaction. Then we do the recording. Then we do the classifying. Then we summarize our transaction. And then we have to interpret and communicate the results to our users. So this is accounting. I hope आपको accounting clear हुआ. Then we have what is bookkeeping. Remember, in the 11th class, we studied the difference between what is accounting and what is bookkeeping. So let's just a quick revise. एक revise करते हैं कि क्या होता है bookkeeping. Bookkeeping is a part of accounting which involves recording of the financial transaction in the books of accounts and posting them to ledger accounts. So students, जो हमारे दो steps हैं accounting के, recording and then is classifying. So जब हम recording करते हैं and हम classify करते हैं, so this is bookkeeping. Whereas accounting is recording
classifying, summarizing and communicating the result. तो अब आपको डिफरेंस समझ आया दैट बुक कीपिंग में सिर्फ दो ही पार्ट्स हैं कि जब हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस एंड देन वी डू द क्लासिफिकेशन, सो दैट इज बुक कीपिंग, whereas accounting is recording, classifying, summarizing and communicating the results. Then students, what is accountancy? So there are two things. Accounting हमने अभी discuss करा. Then what is accountancy? Systematic knowledge of accounting. अगर आपके पास knowledge है that you're studying the rules, you're studying the accounting standard, you're studying the concepts, so that is accountancy. आपको knowledge है accounting की, so that is accountancy. Whereas accounting is जब आप practically accountancy को अपनी knowledge को apply करते हो, that is accounting. Then we have three branches of accounting. So students, accounting की three major branches हैं, and all three branches you are going to study in your BCom, maybe in second year and then in the third year subsequently, but you will be studying, आप ये तीनों branches को पढ़ोगे. So starting में अभी we are doing the financial accounting. Next year, we're going to study about the cost accounting, and then in the final, year, we're going to study about the management accounting. So these are the three major branches of accounting. So let's talk about the FA, financial accounting. So financial accounting is that branch of accounting which records financial transactions and events, summarizes and interprets them before communicating the result to the users. So students, जब हम financial transactions को record करते हैं, summarize करते हैं, so that is our financial accounting. Okay. It determines the profit earned or loss during a year. So financial accounting का purpose क्या होता है? ताकि हमें पता चले कि हमारे what is our profit, हमारा कितना profit हुआ, कितना loss हुआ. Then it tells us about the financial position of the firm. अगर financial accounting कर रहे हो तो आपको कंपनी की financial position के बारे में information मिलेगी, idea मिलेगा. So that is financial accounting. Then we have cost accounting. So students, financial accounting is concerned with the financial transactions, और जो हमारी cost accounting है, that is concerned with the cost of products, cost of operations, process और activities. जब हमें किसी भी हमारे टास्क की, किसी भी हमारी एक्टिविटी की या किसी भी हमारे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, लेबर कॉस्ट यू वांट टू नो, सो देन यू विल स्टडी, विल टॉक अबाउट द फाइनेंशियल अकाउंटिंग. जब भी हमें किसी प्रोडक्ट की, किसी अपने ऑपरेशन की, किसी प्रोसेस की जब हम कॉस्ट से कंसर्न्ड हैं, देन वी आर डूइंग, देन इट इज कॉस्ट अकाउंटिंग. Next branch of accounting is management accounting. So it is concerned with the analysis of financial information for decision making by management. So basically जब हम अपने management के लिए accounting करते हैं to help them in taking decisions, so that is management accounting. So is manage in the management accounting हम एक quantitative and qualitative analysis करते हैं. We prepare reports and we use this information for decision making by management. Then students, next topic is the accounting process. So जो हमारा accounting process है वो कहाँ से start होता है, वो क्या होता है? So students, accounting process always starts with identification of financial transaction. अगर आप accounting कर रहे हो तो आपका first step रहेगा to identify the financial transaction. So what are financial transaction is the monetary transaction. कौन सी transactions होती हैं जिनको हम कहते हैं कि वो financial transaction है? For example, if I have purchased a building for say 50,000 rupees, if I have purchased the building, एक hypothetical example है 50,000 की आपने एक building purchase करी. So in this transaction आप देखोगे 50,000 की cost involved है. So this is a financial transaction, इसमें money involved है. If I say that I'm going to the market to purchase
Stationery. So I'm going to the market and purchase stationery. मैं जा रही हूँ market stationery लेने. Is this a financial transaction? No, because there is no monetary transaction. There is no money involved in it. So सबसे पहला step जो हमारा accounting process का होगा, that is always to identify the financial transaction. The second step is recording. In recording में हम क्या करते हैं? We prepare journal, we prepare cash books, purchase book, sales book, BP, bills payable book, bills receivable book, and journal proper. So your recording is your journal entry. Then is classifying. So classifying is posting them to ledger. So when we summarize the journal entry, we classify the journal entry recorded transaction account wise. So that is ledger. You are already aware of it. Then we have is summarizing. After recording and classifying, we have summarizing. In summarizing, we do the trial balance. We prepare the trading and P&L account, and then we do the balance sheet. After summarizing, we have analysis and interpretation. So we analyze our results. We analyze how much profit we have made from the past year, कितना प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ देन अकॉर्डिंगली जो भी आपके रिजल्ट्स होते हैं फाइनल अकाउंट्स के आप उनको इंटरप्रेट करते हो एंड कम्युनिकेट टू द यूजर्स सो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा हुआ है हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग we have some internal users and then we have some external users. So internal users are your employees, the management, and external users your banks, financial institutions. We have public is also our users of the accounting information. So this was all the accounting process. Let's understand the next topic is purpose of accounting. Students, हम accounting करते क्यों हैं? हमारा purpose क्या है? In earlier times जब accounting के बारे में इतनी knowledge नहीं थी, इतने educated नहीं थे जब सब, then they used to prepare a basic book, a basic register where they used to record every transaction date wise. So that everything was, replaced by accounting. So accounting करते क्यों है? Accounting का purpose क्या है? Number one, it replaces the memory. आप अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो आपको सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड आप सब कुछ लिख रहे हो ऑनलाइन लिख रहे हो इधर यू आर डूइंग इट ऑफलाइन आपके पास सब कुछ एक रिकॉर्ड है सो अकाउंटिंग करने का एक पर्पस है दैट एक एडवांटेज है दैट इट रिप्लेसेस मेमोरी आपको सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है यू आर प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स आपके पास सारा डेटा है राइट The second purpose is ascertaining profit or loss and incurred in financial position. अगर आप अकाउंटिंग नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी फर्म ने आपके बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न करा और कितना लॉस करा एंड व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म how many assets you have, how many liabilities you have. So accounting से हमें एक तो कंपनी की financial position पता चलती है, right? And एक position पता चलती है. Financial position tells us about the profit and loss. And then positional statement, it tells us about the balance sheet. It tells us about the assets and liability. कंपनी के पास, firm के पास, आपके business के पास कितने assets हैं, कितने liabilities हैं. So it helps management, it helps in decision making, it facilitates comparative study. तो जब हम accounting करते हैं तो उसके एडवांटेज होता है कि इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग आप अपने रिजल्ट्स के बेस पर डिसीजन ले सकते हो कि आपको अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स फ्यूचर जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं वो अकॉर्डिंगली आप करोगे देन वी हैव सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग double entry system. We follow the double entry system of accounting. By double entry system, इसका क्या meaning है that for every transaction there are two effects. So dual aspect of every transaction. अगर आपने cash purchase करा तो आपकी purchases increase हो रही हैं and आपका cash decrease हो रहा है. Journal entry would be purchases to cash account. So
We follow the double entry system of accounting and not a single entry system. हम single entry system of accounting follow नहीं करते because in single entry system only one aspect of transaction is recorded. Whereas in double entry system, dual aspect of transaction, दोनों aspects आपके transaction के record करते हैं. So we follow the double entry system of accounting. Then is basis of accounting. We know हमें पता है कि there are two bases, दो bases हैं accounting के, एक है cash base and एक है accrual base. So students, कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, हम ट्रांजैक्शंस को तब ही रिकॉर्ड करेंगे जब हम कैश पे करेंगे या कैश हमें मिलेगा. Either we'll pay the cash or we'll receive the cash, only then transactions are recorded. So कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है कि सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव परचेज्ड अ मशीनरी ऑन कैश. सो मैं रिकॉर्ड करूंगी बिकॉज मैंने कैश पे करा एंड मशीनरी परचेज करी. नाउ अगर मैंने मशीनरी को क्रेडिट पर परचेज करा, क्रेडिट पे परचेज मींस दैट मैंने अभी कैश पे आउट नहीं करा, आई विल पे इट लेटर. सो इन कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग मैं ये वाली ट्रांजैक्शन को नहीं रिकॉर्ड करूंगी बिकॉज इट इज क्रेडिट परचेज. ना हमने कैश पे करा है ना हमें कैश मिला है, सो विल नॉट do the cash, will not record it under cash base of accounting, will do it under the accrual base. So we follow the accrual base of accounting जिसमें हम both the cash and credit transactions को record करते हैं. Easy. There are two bases of accounting. One is cash base of accounting and one is credit base of accounting. So हमें पता है कि हम cash base of accounting में सिर्फ cash transactions को record करते हैं जब हमें cash receive हुआ या जब हम cash pay out करेंगे. Whereas in accrual base of accounting we'll do both. We'll do the cash transaction and we'll do the credit transactions. Okay, students. So let's move to the next topic, that is terms of important terms of accounting. Capital expenditure. Capital expenditure क्या होता है students? Expenditure incurred to acquire assets. So जब भी हम assets को acquire करने के लिए expenditure कर So जब भी हम assets को acquire करने के लिए कोई भी expenditure करते हैं, that is capital expenditure. So for example, जब आप कोई मशीनरी परचेज कर रहे हो, आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो, कंप्यूटर कर रहे हो, जब भी कोई बिल्डिंग कर रहे हो, योर परचेजिंग अ कार, सो जब भी कोई एसेट को परचेज करने के लिए आप एक्सपेंडिचर करोगे, दैट विल ऑलवेज बी, वो हमेशा होगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर. एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा incurred, and expenditure incurred, the benefit of which will be consumed or exhausted within the accounting period. जो स्टूडेंट्स हमारे डेली नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं ना, एवरी डे एक्सपेंस और मंथली एक्सपेंस, वो हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे जिनका बेनिफिट हमारा 1 ईयर में ही एग्जॉस्ट होगा. सो दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, जब भी हम कोई एसेट को एक्वायर कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप देखो, अगर आप आज एक एसेट खरीद रहे हो तो उसका बेनिफिट 1 ईयर में एग्जॉस्ट नहीं होगा. आपने आज मशीनरी खरीदी तो आपको पता है दैट दिस विल लास्ट फॉर 5 to 10 years. सो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलवेज विल बी, जो हम किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए जो भी हम एक्सपेंस करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, दैट विल बी कैपिटल. और जो भी हमारे डेली नेचर के एक्सपेंसेस होंगे, फॉर एग्जांपल आपको सैलरी पे करनी है, यू आर पेइंग द रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, सो दैट विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. देन नेक्स्ट टर्म इज कैपिटल रिसीप्ट. सो जब हम कुछ एक्सपेंडिचर करेंगे, कुछ एक्सपेंस करेंगे, जब हमारा कैश पे आउट होगा, जब हम कैश पे करेंगे, तो वो हमारे एक्सपेंडिचर होंगे या रेवेन्यू होगा या कैपिटल नेचर का. जब हमें रिसीव होगा, जब हमें कैश मिलेगा, सो दैट विल बी रिसीट्स. सो रिसीट्स विल आल्सो बी ऑफ टू टाइप्स, या तो कैपिटल रिसीट होगा या रेवेन्यू रिसीट होगा. सो कैपिटल, एज द नेम सजेस्ट,
जब भी हम किसी एसेट को सेल कर रहे हैं एंड उसके बाद जो हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है, दैट इज कैपिटल रिसीव। Amount received against transactions which are not revenue in nature. जब भी आप किसी asset को सेल कर रहे हो, for example, you're selling your machinery, आप अपनी building को सेल कर रहे हो, you're selling the furniture. So उनसे जो भी हमारी receipt होंगी, that will be the capital receipt. And revenue receipt is the amount received in the normal course of business against sale of goods. So जो भी आपको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी आपकी रिसीट्स होंगी, दैट विल बी योर रेवेन्यू रिसीट। जैसे आपको सेल ऑफ गुड्स, आपने गुड्स सेल करे, आपको जो भी इनकम रिसीव हुई, दैट विल बी अ रेवेन्यू रिसीट। आपको इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिला, दैट इज ऑल्सो रेवेन्यू रिसीट। देन यू हैव अ फिक्स्ड डिपॉजिट, उस पे भी इंटरेस्ट रिसीव हुआ। एवरीथिंग जो आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपको जो भी अमाउंट रिसीव होता है, दैट इज रेवेन्यू रिसीट। एंड जो भी आप नॉर्मल बिजनेस के रूटीन में जो भी आप एक्सपेंडिचर करते हैं, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। देन वेरी important term, that is deferred revenue expenditure. So deferred revenue expenditure is a revenue expenditure, but its benefit is estimated to accrue in more than one financial year. So students, deferred revenue expenditure is a very important term. Deferred revenue expenditure, इसका स्टूडेंट्स एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जिसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बहुत ध्यान से समझेंगे कि जब भी हम एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारा लार्ज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं, तो उसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों कहते हैं? सी स्टूडेंट्स, जब भी आप एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने अपने प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट करी एंड यू हैव स्पेंड से 1 लाख रुपीज ऑन द एडवर्टाइजमेंट, तो आप बताओ, जो आप इस साल फॉर एग्जांपल इन जनवरी, ऑन 11 जनवरी, आप एक 1 लाख रुपीज एक्सपेंडिचर लगा रहे हो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पर, तो आपको नहीं लगता उसका जो बेनिफिट है वो सिर्फ आपको 1 ईयर मिलेगा? ऐसा है? या आप अगर इतना एक्सपेंस अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, डूइंग इट ऑन टीवी, आप होर्डिंग्स लगा रहे हो, बट एडवर्टाइजमेंट का जो भी बेनिफिट है वो डेफिनेटली आपका मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए आपको उसके बेनिफिट मिलेगा, उसका आपको फायदा होगा। सो जब भी किसी भी चीज पे हम एक्सपेंडिचर करते हैं जिसका बेनिफिट हमें पता है कि ये मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर है, ये हमें सिर्फ इस साल नहीं मिलेगा इसका बेनिफिट, इसके आने वाले 3 to 5 years में भी हमें इस एडवर्टाइजमेंट से बेनिफिट होगा, सो इनको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, जो 1 लाख रुपीज हमारा एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर है नाउ टुडे, सो उसको हम टोटल 1 लाख रुपीज अपनी बुक्स में एक्सपेंडिचर शो नहीं करेंगे। व्हाट वी विल डू इज वी विल शो इट, वी विल ग्रेजुअली ईयर बाय ईयर बेसिस हम इसको अपनी एक्सपेंस चार्ज करेंगे बुक्स में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लगता है कि 5 years तक हमें इसका बेनिफिट मिलेगा एंड 1 लाख रुपीज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है जो मैं आज पे कर रही हूँ, सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं 20,000 एवरी ईयर अपनी बुक्स में अपना एक्सपेंस शो करूंगी, रादर देन शोइंग इट इसको 1 लाख रुपीज को आज ही एक्सपेंडिचर दिखाने से बेटर होगा, बिकॉज हमें पता है इसका बेनिफिट जो है वो मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर होगा। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल शो इट एन एक्सपेंस, मैं हर साल 20,000 का एक्सपेंडिचर दिखाऊंगी, ताकि वो 1 लाख रुपीज का जो मेरा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है उसकी कॉस्ट कवर हो टिल द टाइम जब तक हमें उसका बेनिफिट रिसीव हो रहा है। Oh, our next topic is accounting concepts. So students, दो चीजें हमने पढ़ी हुई हैं कि एक होता है accounting concept and another is accounting conventions. So accounting concept and accounting conventions में क्या difference है? Accounting concepts क्या होते हैं? हमारे assumptions. They are the foundation of accounting conventions. They are assumptions which are to be pre-assumed to be followed in the preparation of
annual accounts. So हमारी three major assumptions हैं students. One is going concern assumption, another is consistency assumption, and the third one is accrual assumption. So we have these three major assumptions जो हम follow करते हैं for you know for preparing the accounts or for they are the foundation. इनको हम rules कह सकते हैं जिनके बिना accounting possible नहीं है, जिनको हम follow करते हैं अपने accounts को prepare करने के लिए. Number one is going concern assumption. Going concern assumption, it is assumed that business shall continue for a long period of time. There is no intention to close the business. So going concern assumption है, हम assume करते हैं इसमें जब भी हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम एक गोइंग कंसर्न अजम्पशन को लेकर चलते हैं कि हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम हमेशा सोचेंगे ना कि हमारा बिजनेस जो है वी वांट टू कंटिन्यू इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. हमारी कोई भी इंटेंशन नहीं है कि हम अपने बिजनेस को क्लोज डाउन करें. सो अकाउंटिंग में हम एक गोइंग कंसर्न अजम्पशन लेकर चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो कंटिन्यू रहेगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट. Second assumption is consistency assumption. So, according to this assumption, accounting practices once selected and adopted should be applied consistently year after year. So ये assumption कहती है कि अगर आपने कोई भी accounting practice आप select करी है, for example आप depreciation में अगर straight line method apply कर रहे हो in 2021, आप अपने accounts prepare कर रहे हो straight line method से, तो एक consistency आपको अडॉप्ट करनी होगी दैट फॉर नेक्स्ट ईयर्स ऑल्सो आप यही वाला मेथड चूज करोगे. बिकॉज अगर हम कंसिस्टेंसी अपने अकाउंट्स में नहीं रखेंगे सो इट विल बी डिफिकल्ट टू कंपेयर द रिजल्ट्स. अगर हम इस साल SLM मेथड यूज कर रहे हैं, अगले साल WDV मेथड यूज कर रहे हैं चार्जिंग डिप्रिसिएशन के लिए, सो हम कंपैरिजन नहीं करेंगे कि हमारा कितना चेंज आया प्रॉफिट में लास्ट ईयर से करंट ईयर में. सो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द रिजल्ट्स टू डू अ कंपैरेटिव स्टडी. Third important assumption we have is accrual assumption. So students, accrual assumption क्या होती है? It says transaction is recorded when it is entered into and not when settlement takes place. Accrual assumption कहती है कि transaction को हम record करेंगे जब वो transaction हुई, जब आपने वो transaction करी, and not when the settlement takes place. इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे अक्रूवल अजम्पशन. सो स्टूडेंट्स, अक्रूवल अजम्पशन में क्या होता है कि आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे जब आपने ट्रांजैक्शन करी. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपने क्रेडिट परचेज करी, यू हैव परचेज मशीनरी, आपने मशीनरी परचेज करी 2 लाख रुपीस की, ठीक है, एंड इट्स अ क्रेडिट परचेज. यू हैव नॉट येट पेड द अमाउंट. आपके पास मशीनरी आ गई, आपने प्रॉमिस करा दैट टुडे इज 11 जनवरी, आई विल पे द मनी ऑन 11 February. सो आप बताओ, आप अपनी बुक्स में ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे या आप वेट करोगे जब भी पेमेंट आप कर दोगे, जब सेटलमेंट हो जाएगा, देन यू विल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन. सो अकॉर्डिंग टू द अक्रूवल assumption, हमारी अक्रूवल assumption कहती है कि हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे ऑलवेज जब वो एंटर हुई, चाहे सेटलमेंट नहीं हुई, कैश आपको रिसीव हो या ना हो, कैश पे आपने करा है या नहीं करा है, बट इफ यू हैव एंटर्ड इनटू अ ट्रांजैक्शन तो आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड करोगे. सो दैट इज अक्रूवल assumption. नो मैटर आपका सेटलमेंट कब हो रहा है, डोंट थिंक अबाउट दैट. सेटलमेंट आपका अगर फ्यूचर डेट भी हो रहा है देन ऑल्सो इट्स फाइन. आपने आज क्रेडिट परचेज करी है, आपने आज क्रेडिट सेल करी है, तो आप उसको आज ही रिकॉर्ड करोगे. जब पैसा आप दोगे या जब आपको पैसा मिलेगा उस डेट पे नहीं रिकॉर्ड करना.
accrual assumption says always record a transaction when it is entered into, जब आपने वो transaction करी. Then so now we have accounting principles. So students, we have three major accounting assumptions जो हमने discuss करी: going concern assumption, consistency assumption, accrual assumption. Now we are going to talk about the accounting principles. So in accounting principle में जो हमारा सबसे first accounting principle होता है, that is business entity principle or accounting entity principle. So it says business entity principle हमारा कहता है that business is considered separate from its owners. Business entity principle हमारा कहता है that business is considered separate from its owners and business जो है वो हमारा हमेशा separate रहेगा हमारे owners से. एंड जो हमारा बिजनेस होगा उसको हम ओनर से डिफरेंट कंसिडर करेंगे बिकॉज हमें पता है कि हमारा जो ओनर होता है, जो भी शेयर होल्डर होता है और जो ओनर होता है, वो हमेशा बिजनेस के लिए क्रेडिटर काउंट होगा. ऑलवेज बिजनेस के लिए लाइबिलिटी साइड में आप देखोगे दिखाया जाता है हमारा कितना इक्विटी शेयर होल्डिंग है, हमारी कितने कैपिटल कितनी इन्वेस्ट हुई. सो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है दैट ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट थिंग्स. बिजनेस ओनर नहीं है और ओनर बिजनेस नहीं है, ये दोनों अलग है. बिजनेस एक डिफरेंट एंटिटी है, उसके लिए ओनर चाहे पैसा बिजनेस में डाल रहा है उसको अपने बिजनेस में. सपोज मेरा बिजनेस है बैग्स का एंड आई एम इन्वेस्टिंग 5 लाख रुपीज इन माई बिजनेस. सो मैं अपने बिजनेस के लिए ना क्रेडिटर रहूंगी बिकॉज चाहे मैं ओनर हूँ, मेरा ही बिजनेस है. पर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि ओनर एंड बिजनेस दोनों अलग चीजें हैं. बिजनेस में पैसा आया है तो वो हमेशा अगर ओनर ने भी दिया है तो भी वो उसके लिए क्रेडिटर ही रहेगा ओनर. ये दोनों हमेशा लायबिलिटी रहेगी बिजनेस के लिए. सो जब भी वी इन्वेस्ट मनी इनटू द बिजनेस तो हमारी जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस. सो कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द enterprise. Next is money measurement principle. So student, money measurement principle says कि हम हमेशा monetary transactions को ही record करेंगे अपनी books of accounts में. देखो अगर monetary transactions होंगी तभी भी then only हम accounts prepare कर सकते हैं. Then only we can do a journal entry जहाँ पर monetary money involved है. Then we have is accounting period principle. So accounting period principle says that life of enterprise is broken into smaller periods so that its performance can be measured at regular intervals. So students, accounting period principle कहता है कि जो भी life है ना एक enterprise की, वो बहुत स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम. जैसे अगर मेरी फर्म, आई हैव स्टार्टेड माय फर्म, तो मैं हर साल उसकी जो हमारा फर्म की लाइफ है उसको डिवाइड करूंगी इन अकाउंटिंग पीरियड. एवरी ईयर मैं अकाउंट्स प्रिपेयर करूंगी एट रेगुलर इंटरवल्स. देन इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल. Full disclosure principle says that complete and understandable reporting of financial of all significant information. फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि जब भी आप अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें आपको जितनी भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स क्या होती हैं, जो भी हमारी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है, जिनको अगर हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे देन it it will be um, it will be misrepresentation, or it will be a fraud for our investors, for our employees or for the public. So हमेशा full disclosure principle को follow करेंगे जिसमें will be doing a complete reporting of the financial transaction, will be informing, will be disclosing all the significant information. Then students, we have the materiality principle. So materiality principle says that importance of an event, only material items should be disclosed. So materiality principle भी यही कहता है कि important information, जो भी significant information है, उनको record करना necessary है. And materiality important information depend करता है.
कोई चीज आपके बिजनेस के लिए मटेरियल है, इम्पोर्टेंट है, वो किसी और बिजनेस के लिए मटेरियल नहीं होगी. सो मटेरियलिटी डिपेंड्स फ्रॉम वन एंटरप्राइज टू अनदर. Next is the prudence and conservatism principle. So students, a very important principle, accounting principle, जो कहता है कि हमेशा एक कंजर्वेटिज्म अप्रोच को फॉलो करना है, विच सेज कि कभी भी आप अपने प्रॉफिट्स को एंटिसिपेट मत करो एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस. कभी भी अपने बिजनेस में ना हमेशा फॉलो कंजर्वेटिज्म अप्रोच कि आपके पास 5 मंथ्स बाद से 10 लाख रुपीज का एंटिसिपेट करते हो, सोचते हो कि प्रॉफिट होगा. सो आप पहले से एंटिसिपेट मत करो कि आपको प्रॉफिट होगा. आप हमेशा एक कंजर्वेटिज्म अप्रोच लेके चलो कि अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, अगर आपने प्रॉफिट के बदले आपको 5 लाख रुपीज का लॉस हो गया, देन व्हाट विल यू डू? सो हमेशा अपने पास एक प्रोविजन लेकर चलना है, एक रिजर्व्स बना के रखने हैं कि अगर लॉसेस हुए देन क्या हमारे पास बैकअप है. प्रॉफिट को कभी भी पहले से एंटिसिपेट करके नहीं रखना, बिकॉज हम एक कंजर्वेटिज्म अप्रोच फॉलो करते हैं. प्रॉफिट होगा, इट्स गुड फॉर एवरीबॉडी, फॉर द बिजनेस, बट पहले से अज्यूम मत करके चलो कि प्रॉफिट होगा. अगर आप पहले से सोच रहे हो कि 5 मंथ्स बाद आपको 5 लाख रुपीज का प्रॉफिट होगा एंड आप अकॉर्डिंगली अपने एक्सपेंडिचर्स प्लान कर रहे हो, सो डोंट डू दैट. पहले प्रॉफिट होने दो, देन थिंक अबाउट दैट. पहले से प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करना, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस. जितने भी लॉसेस होंगे उनके बारे में बैकअप लेके चलना है. Then we have historical cost principle. So historical cost principle says that asset is recorded in the books of account at the price paid to acquire it. हिस्टोरिकल कॉस्ट कहती है कि जब आपने कोई एसेट खरीदा, तो जिस प्राइस पर खरीदा आप उसको रिकॉर्ड करोगे बुक्स में. जैसे आपने 10 लाख रुपीज का एसेट लिया, से आपने कार परचेज करी, तो आप उसको 10 लाख में ही रिकॉर्ड करोगे. आज उसकी मार्केट वैल्यू से 1 ईयर लेटर उसकी मार्केट वैल्यू 7 लाख रुपीज है, तो आप अपनी बुक्स में चेंज नहीं करोगे, बिकॉज यू आर फॉलोइंग द हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल. जिस कॉस्ट पे आपने एसेट को एक्वायर करा, उसी कॉस्ट पे आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड करोगे. देन वी हैव मैचिंग प्रिंसिपल. सो हम हमेशा काउंटिंग करते टाइम मैच करते हैं अपने एक्सपेंसेस को अपने रेवेन्यू से. सो रेवेन्यू ऑफ द काउंटिंग पीरियड शुड मैच विद द एक्सपेंसेस टू डिटरमाइन द करेक्ट प्रॉफिट. अगर आपको सही प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो आपके जितने भी आपके रेवेन्यू आए, जैसे आपने सेल करी, सेल ऑफ गुड्स करे, अपने, मेरा बैग्स का बिजनेस है, मैंने 1000 यूनिट्स ऑफ बैग सेल करी. सो मुझे अपने रेवेन्यू के साथ अपने एक्सपेंसेस मैच करने हैं. सो फॉर जनरेटिंग वन से फॉर जनरेटिंग इनकम फ्रॉम सेलिंग बैग्स, जो भी मेरे एक्सपेंसेस थे, से एडमिन एक्सपेंस, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सब कुछ मैं मैच करूंगी टू रिकॉर्ड द करेक्ट प्रॉफिट. देन our next principle is duality principle. So हमें पता है कि accounting is a dual aspect concept, जिसमें हमेशा for every debit there is an equal amount of credit. तो हमेशा जर्नल एंट्री में हम ऐसे ही करते हैं. कैश परचेज करा, परचेज इज अकाउंट डेबिट 5000 फॉर एग्जांपल टू कैश अकाउंट 5000. ड्यूअलिटी प्रिंसिपल सेज कि हमेशा इस सेम अमाउंट का डेबिट होगा एंड क्रेडिट होगा, बिकॉज हम ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं. Then is revenue recognition concept. So revenue recognition concept says revenue is recognized when transaction entered into and not when the settlement takes place. So जो हमारा accrual assumption था ना students, that is similar to the revenue recognition concept. आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड करोगे, जैसे आपने क्रेडिट सेल करी. क्रेडिट सेल का क्या मीनिंग है? आपने गुड सेल कर दिए, क्रेडिट पर करे हैं, तो आपको पैसा आज रिसीव नहीं होगा, इट विल बी रिसीव्ड ऑन अ लेटर डेट. आपको 1 मंथ का जैसे टाइम पीरियड मिला है. आपने 11 जनवरी को सेल करी, ठीक है, क्रेडिट सेल करी, और आपको पैसा कब रिसीव हो रहा है? से 11 फरवरी को, 1 मंथ बाद. तो आप अपने बुक्स में रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करोगे? जब आपकी ट्रांजैक्शन हुई. आपने 11 जन को ही क्रेडिट सेल करी है, तो आप 11 जन पर ही सेल रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट सेल ऑफ 1 लाख रुपीज.
जब सेटलमेंट होगी तब आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, जब ट्रांजैक्शन आपने एंटर करी, जब ट्रांजैक्शन आपकी हुई, देन यू विल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। So students, ये हमारे थे important accounting principles and the accounting concepts. So we have 10 minutes left for the class and हमेशा से um, एक अप्रोच रहेगी हमारी that last 10 to 15 minutes will be your doubts. So जो भी आपके डाउट्स हैं वो आई विल आंसर, आई विल पोस्ट इट इन द लाइव इवेंट क्वेश्चन आंसर सेक्शन। जो भी आपके डाउट्स हैं, कोई भी टॉपिक यू वांट मी टू रिपीट, आप दोबारा समझना चाहते हो, तो हमेशा के लिए फॉर एवरी क्लास हमारा ये अप्रोच रहेगी दैट लास्ट 10 to 15 मिनट्स विल बी फॉर योर डाउट्स। सो जो भी कोई क्वेरीज हैं आप पोस्ट कर सकते हो, आप लिख सकते हो। Good morning, students. Good morning, Shivam. Good morning, Sambhav Shri Vashisht. And when this class is started, so the timing of the class is 9:30 to 10:30. So the class and timing is fixed and dates you have in your schedule. Dates आपको अपने वेबसाइट पर देखोगे तो जो भी आपका टाइम टेबल आया है उसमें प्रॉपर स्केड्यूल है कि कौन सी डेट वी हैव क्लासेस। आर नेक्स्ट क्लासेस डे आफ्टर टुमारो 13 Jan। टाइमिंग हमारा फिक्स है, क्लास टाइमिंग इज 9:30 to 10:30। बुक आपको जो रेफर करनी है दैट इज बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, JR मोंगा। एंड आपको कोई भी और डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो यू कैन पोस्ट इन द लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन। कोई भी आज के क्लास का कोई भी टॉपिक आप दोबारा समझना चाहते हो, देन ऑल्सो आप लिख सकते हो, आई विल रिपीट इट। नो इशू स्टूडेंट्स, दिस इज योर फर्स्ट क्लास, तो थोड़ा सा टेक्निकल वो होता है दैट आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास आपको इतना ट्रबलसम नहीं होगा, डोंट वरी, दैट इशू विल बी रिजॉल्व। So from next class onwards, be on time. Yes, you can get these notes. So students, जो क्लास के नोट्स होंगे उसके लिए इन द नेक्स्ट क्लास मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगी। यहाँ पे आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट आई क्लाउड ड्राइव खुलेगी। उस ड्राइव से आप ये सारे नोट्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। सो डोंट वरी, sure, don't worry about the logging issues. Everything will be resolved from next class. क्लास के लिए आप गो टू द SOL वेबसाइट, वहां पर आप स्केड्यूल चेक करो, अपने टाइम टेबल चेक करो, बीकॉम सेमेस्टर 1 अपना नोट्स में वहां पर जाके स्केड्यूल ओपन करो। एंड माय नेम इज गुनीत कौर, आई विल बी टेकिंग योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आप बस डेट्स नोट कर लो ऑन दीज डेट्स। फॉर एग्जांपल योर नेक्स्ट क्लास इज on 13th, day after tomorrow, then is on 18th. So schedule को follow करो and accordingly join the classes. Notes I will share in the next class. I have not yet shared the link. मैंने अभी लिंक शेयर नहीं करा। I will do it in the next class. So मैं publish ही करूंगी लिंक and don't worry, आपको मिल जाएगा। आज की क्लास के लिए I have not shared any link so far. So recording of this class will be done, but आपको एकदम available नहीं होगा. It will take some days to upload this recording. So better है कि आप लोग live sessions attend करो, because recording आपको इतनी जल्दी available नहीं होगी.
So I think there are a lot of questions regarding classes. So एक students fixed schedule होता है जिसके regarding आपको dates given है. So we have to follow that also. जो भी number of classes allotted है. So let's just stick to that कि जो भी हमारे classes का schedule है, we follow that and we join every time on time like 9:30 to 10:30. And my approach for the classes will be that last 10 to 15 minutes will be for your doubts, majorly doubts regarding to the subject, regarding to the session that I have covered. And and जो भी आपके वैसे logging issues हैं, technical issues हैं, don't worry, by next class everything will be resolved since आपकी first class थी, so that happens, don't worry. And let me know, we have 3 more minutes before I end the class. Let me know आपको कोई और doubt रहा for the session जो भी cover हुआ. आज की क्लास में हमने कवर करा that basic that we have studied in the 11th standard कि what is accounting, what is the accounting process, what are the bases of accounting, cash base, accrual base. Then we talked about कि accounting का purpose क्या है, what is the purpose of accounting. Then we talked about the accounting concepts, we talked about the accounting principles. So ये हमारी foundation है, basic है. In the next class also we'll study some more important terms. We will talk about the IFRS, we will talk about the accounting standard. और भी जो हमारे important इंट्रोडक्शन पार्ट में जो भी हमारे important terms हैं जो हमें पता होना चाहिए, we'll talk about that in the next class. So I think we are good. Anything else you want to know? There is no official group as such for the students. Yes, I will give you a brief introduction in the next class. Don't worry, जब हमारी next class day after tomorrow है, मैं आपको एक quick revision दे दूंगी what we have covered today. Just be on time, join timely for the class because if you don't join on time, then we have to wait for like 10 to 15 minutes to start the session. And somebody was asking that why class is not started because we are waiting for the students to join. So अगर आप लोग time पे join करोगे, the class will start on the time. Okay, I'll take care of the full screen view. I think that's all for today's session. So in the next class हम फिर से introduction की एक brief discuss करेंगे of accounting and जो और हमारे important topics हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं we'll cover that. And that's all for today and we'll join day after tomorrow on 13th of January. Timing will be same 9:30 to 10:30. And I've already published that the book that we have to refer is J.R. Monga, Basic of Financial Accounting. So see you all in the next class and have a good day ahead. Thank you all.